Hi guys, so for the first look I have chosen my favorite biker shorts. You must have seen it, like I did a haul with Shein a long time back. उसमें मैंने दिखाया था that I'm obsessed with biker shorts and I got one in denim. ओके सो इसको मैंने पेयर किया है एक ब्रालेट के साथ. आई मीन आई हैव लेड माई शर्ट अंडरनीथ अ ब्रालेट. यू कैन ऑलवेज यूज इट एज अ क्रॉप टॉप ऑल्सो. हियर आई एम ट्राइंग टू शो यू माई फुटवेयर दैट आई हैव स्टाइल्ड विद इट. These are from Zara. Here is my stupid dance. For the second look, I have paired it like my shirt with a very beautiful satin dress. I love how this look is like very romantic and chic at the same time. Okay, for the accessories I have paired like very beautiful gold statement earrings and a pearl hairband. Basically ये मैंने hairband इसलिए लगाया because you know bangs, and I didn't want bangs इस look में क्योंकि ये बहुत ही mature kind of look है. Now you can see my bangs flying and being happy that I have given them freedom to just be. For the third look, I have given it some Indian touch. As you can see, मैंने इसको पेयर किया है वाइट प्लाजो के साथ. वैसे मैं बता दूँ, अगर हम मोनोक्रोम आउटफिट पहनते हैं ना, वो इंस्टेंटली अच्छा लगने लगता है. एज यू कैन सी वाइट ऑन वाइट लुक्स अमेजिंग. उसको मैंने एक्सेसरीज़ के लिए पेयर किया है कुंदन नेकलेस के साथ, लाइक वेरी इंडियन नेकलेस जो होता है उस तरह का. और फिर जैसे कि आप देख सकते हो कुंदन नेकलेस में थोड़ा पर्ल का वर्क है. मैंने पर्ल वेस्ट बेल्ट पहना है. फॉर द लास्ट लुक इन दिस वीडियो आई हैव पेयर्ड लाइक आई हैव worn माई शर्ट लाइक अ कवर अप एज यू कैन सी, बट मैंने उसको बंद नहीं किया है या नॉट टाई नहीं किया है. आई एम जस्ट टकिंग लाइक कॉर्नर से, और फिर बैक से मैंने थोड़ा सा रोल किया है इसको. तो बहुत ही लूज काइंड लाइक अगर दूर से देखोगे तो आपको वो टॉप ही लगेगा. ऑल्सो फॉर द एक्सेसरीज मैंने बस एक नेकलेस पेयर किया है विच इज़ लाइक अ वेरी चंकी नेकलेस. आई थिंक इट्स अ ग्रेट वे टू यू नो ऑल्सो कवर अप योर आर्म्स एंड शो द टॉप, दैट टैंक टॉप जो हम नहीं पहनते हैं क्योंकि हमें नहीं कभी कभी मन करता कि अपनी आर्म्स दिखाने का, टू गिव इट लाइक अ रियली नाइस twist and still show off that cute tank top that's lying around in our wardrobe. And yeah, that is it for the video. I really hope that you guys enjoyed this video. Make sure that you comment your favorite outfit and please like this video, subscribe to my channel. I'll see you guys next time. Bye.